So today we are going to do the last block 8. Yes, sir. ठीक है, आज खत्म कर देते हैं and then we can discuss some things about Spanish if you wish to, and if you want to ask how should you proceed with Spanish and what are the ways ahead. Sir, I have a doubt. बताइए further doubts. Sir, what is the difference between Kero and Kedo? Kero and Kedo. Yes, sir. Querer is querer verb. Kedar is kede is kedar verb, which means to stay. Okay. ठीक है सर. बट केदार वर्ब के अब काफी यूजेस होते हैं. टू स्टे भी होता है और टू कीप भी रख लेते हैं हम लोग मीनिंग. सो आई टेल यू देयर आर मेनी वर्ब्स व्हिच हैज गॉट मल्टीपल मीनिंग्स. So we just need to make sure that we are understanding the proper meaning of a proper thing in the proper context. That's what we should keep in mind. ठीक है, आइए let's move ahead to block 8. Sir, what is Tantas? तांताज. तांताज हमने नहीं पढ़ा है. पोकोस, तांताज, मेनूस, मुचो, ऐसा सब. तांताज इज टू मच और काफी ज्यादा ऐसा. एग्जाम्पल, तेंगो तांतो दिनेरो, आई हैव टू मच ऑफ मनी. एंड इफ आई से तेंगो demasiado dinero, I have enough money. And sir, what is Libreta? Booklet? लिब्रेता या लिब्रितो. Libreta. लिब्रेता बुक ही होती, छोटी बुक. Okay. लिब्रो से वर्ड आया, ठीक है. लिब्रो से Yes. लिब्रेरिया एंड देन लिब्रेता. लिब्रेता हम लोग उसके लिए भी यूज करते हैं. एक जो बुक, आई टेल यू द एग्जैक्ट. Sir, like notebook. नहीं, Diary? Small diary? उसके लिए भी वर्ड है हमारे पास. नोटबुक तो देखो, नोटबुक होता है क्वाderno वैसे तो. बट लिब्रेटा को हम लोग नोटबुक से ज्यादा ना बुक का ही दूसरा फॉर्म, आई टेल यू. हाँ, ये जो स्पाइरल बाइंडिंग वाली नहीं होती, Yes, sir. वैसी नोटबुक. ओके, जैसी ये वाली है. Got it. ओके, और इसमें अकाउंट बुक और सेविंग बुक भी लिखा आ रहा है, तो सिमिलर थिंग कैन बी यूज्ड. ओके चीकोस, सो लेट्स मूव अहेड. हमने कहाँ तक किया, कुछ किया या अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना? आई हैव नो आइडिया, यू हैव टू टेल We मी. have done like मेसी का पार्ट हो गया था, उसके बाद वाला भी हो गया था. चे गेवारा हो गया था, चे गेवारा एंड ख्वान कार्लोस Yes, वान. सर ये यूनिट खत्म हो गया था. मतलब यस ये पूरी यूनिट खत्म हो गई थी. यस. तो फिर हमारा क्या बचा अब? एक सेकंड सर, एक सेकंड. शायद वो यूनिट नहीं, वो वहीं तक खत्म हुआ था. यूनिट नहीं, मुझे लगा यूनिट एंड है वहाँ पर. हाँ, अदर्स प्लीज लेट मी नो अभी कितना बचा है, क्या पढ़ाना है. बिकॉज कुछ नहीं पता तो फिर हम थोड़ा पेपर वगैरह ट्राई कर लेते हैं ऑफ हाउ पेपर माइट कम. एनी आइडिया यू हैव गॉट ऑफ व्हेन योर पेपर No इज sir. एक्सपेक्टेड टू हैपन? No sir. ओके, And according to my calculation, it will start in March. Same here. पेपर विल स्टार्ट इन मार्च. मतलब पेपर होगा तो स्टार्ट क्या, एक दो पेपर तो है. सर मेरे तो 7 टोटल 7 है ना. हाउ कम? स्पेनिश में 7 पेपर होते हैं? नहीं स्पेनिश नहीं, दूसरा कोर्स भी तो है. अच्छा, ओके. स्टार्ट. हाँ, तो उन केस में स्टार्ट बोलेंगे. बट आई एम होपिंग कि जल्दी बहुत कुछ होने वाला. 15 फेब तक सब कुछ खुल जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन न्यूज़पेपर्स एंड एवरीवेयर. सर एक्चुअली अगर वो खुल जाएगा, बट फिर नोटिस अगर 15 तक आएगा तो 15 डेज का टाइम भी होगा, तो उस कैलकुलेट. हाँ ठीक है, फिर मैच. Because last paper was on 23rd Feb. So अगर postpone भी होगा तो फिर next month ही लेंगे. ओके. हाँ बताइए, हमने कहाँ तक किया? चीकोस, यू हैव टू टेल मी. आई गेस यूनिट 28 we have to start. Unit 28 we have to start. Okay, la gastronomia. Oh my god, what is gastronomia? Gastronomy. Okay, gastronomy. Yeah. Gastronomy means anything related to food related stuff hai. So again, Spanish food is quite extensive, but because लगता है दुनिया में none of the countries have as extensive food as India has got. India में everywhere you go you have something specialized
each and every area, each and every state has got specialized food, which is not there in the world. But Spain, may again, there are few dishes which are quite famous. Let's see a few of them. It says, "Has probado alguno de estos alimentos?" Have you tried any of these dishes? So first is cafe. Cafe is coffee. Next is tortilla de patatas. Now tortilla आलू is some पराठा paratha or omelette के बीच का you can say mixture. Then arroz con frijoles, similar to something like rajma chawal type. Then we have got ceviche. Then we have got chorizo. Okay. Then we have got arapa. So let's read one by one and then let's understand about these things. And then question number activity 1 भी हम यहीं कर लेंगे और activity 2 भी, because it's doable and food में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं. चलिए let's read. Can someone go ahead? Okay, so I'm doing. Yes, please. El mundo hispánico es muy rico en su gastronomía. Tiene una gran variedad de alimentos y recetas que triunfan no solo en sus países, sino también en el resto del mundo. Un café muy conocido en todo el mundo es el café colombiano. Colombia es el primer país productor de café en el mundo. Su aromático café es normalmente exportado a Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos y Suecia. La tortilla de patata es un plato típico de España. Es un plato simple, pues solo tiene huevos, patata y a veces se incluye cebolla o pimientos. A pesar de su sencillez, es un plato delicioso. Otro plato sencillo pero muy rico y nutritivo es el arroz con frijoles. Es muy popular en América Latina y el Caribe. Sus ingredientes: el arroz blanco acompañado de frijoles marrones, rojos o negros. Son baratos y por ello son asequibles a todas las personas. Además, es un plato con alto contenido en hierro y proteínas. El ceviche es uno de los platos más famosos de Perú. Aunque se puede encontrar en muchos otros países del litoral del Océano Pacífico, como Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua. Este plato tiene pescado o marisco marinado con limón o lima. A esto se le añaden otros ingredientes según el país, como cebolla, cilantro, maíz, aguacate, pimiento. El chorizo es un embutido típico en España que está hecho principalmente con carne de cerdo picada y adobada con especias, sobre todo con una especia que se llama pimentón, que le da su color rojo y sabor ligeramente picante. El chorizo se come frío o caliente, solo o con pan, y también aparece en muchas recetas típicas de España, como el cocido madrileño o la fabada asturiana. Por último, la arepa es un alimento hecho de masa de maíz molido en forma circular, que es plato tradicional en Colombia y Venezuela. Las arepas se pueden comer solas o rellenas de queso, carne
o frijoles. Okay, perfect. So I'll explain you in short of what happens is coffee is like coffee was firstly manufactured in Colombia. So that's why Colombian coffee is too famous and too good. And its aromatic coffee is normally exported to US, German, Japan, and other small countries. Okay. Then we go to tortilla de patatas. Now tortilla de patatas, if I'll show you, have I shown you any video on food? Spanish food? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मेरे को तो उसमें आई गेस पता ये tortilla de patata जरूर आया होगा. So what it is something a mixture of जैसा है पराठे जैसा बट इट्स फुल ऑफ एग सो इट्स टू थिक. जैसे पिज्जा होता है डोमिनोज का उससे भी ज्यादा थिक होता है and it's made up of potato onions are also there, then we've got eggs are also there, so I'll show you the सर वो picture on the नाम से आलू पराठा ही लग रहा है। नहीं वो पराठे पराठा तो पतला होता है ना, ये पिज्जा बेस जिससे डबल टाइप का ऐसा थिक होता है. पैनकेक जैसा है थोड़ा। नहीं नहीं वो तो बहुत मोटा हो गया समवेयर थिक ऐसा. ठीक है. Then we Reach. move to if you I'll show you some pictures and videos. Then we talk about then ceviche. Ceviche is again a very famous dish in Peru, although now it's found in all the most of the Latin American countries. Again, it has fish marisco marinated and lemon in it with lot of veggies. Then we talk about chorizo. Again, it's a non-veg dish of like Spain, and then which is eaten cold also and hot also depending how do you want to eat. And then last one is arepas. Again, it's a traditional dish of Colombia and Venezuela, which is made up of cheese, meat and frijoles. Something like कैसा लग रहा है ये राइट में जो है arepas if you see. Can you compare to any dish in India? दही भल्ले जैसा लग रहा है मुझे तो. सर फर्स्ट वाला तो चाट सैलेड मान लो, सेकंड वाला पेपरोनी है, Okay, and third one? थर्ड वाला मतलब पैटीज है. नहीं नहीं कहाँ से पैटीज है, नॉट एट ऑल. आई नो आई वुड से समथिंग लाइक छोटा सा टिक्की को कुलचा चीज टाइप. में डिप करके फ्राई हाँ करते हाँ काफी कुछ ऐसा करते हैं कमा तरंगी लोग. ओके बट इंडिया से ज्यादा तरंगी लोग तो कहीं भी नहीं इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट्स. लाइक द फूड दैट वी कुक इज टोटली आउट ऑफ द वे. इट ब्लोज एवरीवन्स माइंड. चलिए लेट्स डू एक्टिविटी 1 राइट नाउ. करने लायक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. करने में obviously it's a good exercise but क्या are we able to will be able to do it right now? Let's see क्या क्या है इसके बाद. ठीक है let's do it. सर व्हाट इज माते? Mate is a name. Mate is a name. माते ये था हाँ El Mate. सर Mate मील। नाम है. El Mate is es una bebida. क्या होगा? सर व्हाट इज मील? पिनिया Miel. Miel is honey शहद. के और पीनिया is pineapple. पीनिया pineapple. So let's do it right now. हाँ ये सारे words lemon lemon stress. फर्स्ट वाले में तिपिका आएगा। हाँ is El Mate es una bebida típica de Argentina. So let's do one thing. Let's have 5 minutes. Let everyone do it. At least try at least. And then one of you or three of you, three different things, and three of you can read one by one. Okay, let's do it. सर व्हाट इज ओहास? Okas? यस सर। Okas is sheets also. Papers. कहाँ लिखा है Okas दे? सर थर्ड लाइन स्टार्टिंग में है। These सर are डैश के बाद में से रेफिरे yerba is like herbs. So leaves of herbs भी बोल सकते हैं. Means जो पत्तियां होती हैं herbs की.
Sir, what is piña? Pineapple. Pineapple. I just ordered pineapple. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, Chief. Sir, what is muedre? Which word? Muedre. Sorry, muerde. कहाँ पे है? थर्ड पैराग्राफ में है. ये Tequila तभी is भी तो used for alcoholic. latino se muerde. L. Wait. एल टकीला वाला ही लाइन में एल टकीला एस्ला डैश मास conocidas Next. उसके नेक्स्ट में ओके अल्कोहलिका extrañe de como de agave normalmente se tomó rodaca limón. कहाँ पे है भाई? Sir, उसी पैराग्राफ में 1 2 3 4 फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है muerde. से अच्छा से muerde Okay, el dash. ओके morder verb है morder. लेट मी चेक. okay. वैसे तो जूस निकालना टाइप्स होता है हाँ टू बाइट से muerde you bite the lemon ना when you drink it. Okay. Yes, sir. Wait a second.
Sita is an appointment, meeting. Okay, sir. सर सर फेचा कौन सी वाली डेट होती है जो हम Fecha date होती है, normal date. ओके ठीक है सर लेट्स डिस्कस इट चलिए, let's read it. El mate es una bebida típica de Argentina y Uruguay. Hmm. La bebida tiene sus o- Origine. orígenes en el pueblo guaraní. El nombre de mate se refiere a la infusión de hojas de hierba mate. सर hierba herb हुआ ना? यही हुआ Yerba, herb. hierba mate. Sir, what is mate? It's a name है. kind of tea. Mate is the name of a drink. के ऊपर फोटो भी दिखाता हूँ मैं आपको. ठीक है secadas y molidas que se sirve en un recipiente una especie de calabaza que tiene el mismo nombre. El mate tiene un sabor amargo y por ello hay personas que necesitan endulzarlo con azúcar, miel o edulcorante. What is this? Sweetener. Okay. Sweetener. Is it on the right one? Edulcorante. Sweetener, I guess, yeah.
So these are the three drinks that we're talking about. First one is mate, second one is tequila, third one is pina colada. La gente no toma el mate porque tiene sed, sino por costumbre o para compartir una clara con otra persona. El mate tiene beneficio para la salud, como por ejemplo, reduce el estrés, aumenta la concentración y ayuda a realizar bien la digestión. Digestion. Okay, next, someone else read the. Excuse me, sir. Yes. So, fifth one will be stress. Stress, reduce the stress and Acha, increases okay. the concentration and helps to like better your digestion. Okay, okay. What is C and D? C क्या था? I have to check. Miel. Meal is sugar and honey and or a sweetener. या तो आप उस पे हनी ऐड करिए या फिर कोई स्वीटनर. Okay. So D is क्या था? Persona, con otra persona. E is stress. And B will be second one? Mate. D El mate. stress. नहीं B, हाँ B तो माते उधर. Okay, okay. चलिए, let's move ahead. Someone do the tequila one. Sir, may I? Yes, Mayank, go ahead. El tequila es la bebida más conocida y representativa de México en el mundo. Esta bebida alcohólica se extrae del jugo de agave. Normalmente se toma solo junto con una rodaja de limón y sal. Primero se chupa la sal, luego se bebe el chupito de tequila y por último se muerde el limón. El tequila también se usa para los cócteles como el llamado margarita, que se realiza con por el tequila, triple sec y zumo de lima o limón. Yes, continue next one. Pina colada y pardon. Okay, sir. La piña colada es la bebida oficial de Puerto Rico desde 1979. Esta bebida empezó a ser conocida a nivel internacional gracias a la canción Escape de Rupert Olmes, conocida también como The Piña Colada Song. Hoy este cóctel tropical es conocido en todo el mundo. Se prepara con piña, leche de coco y ron blanco. El ron es una bebida alcohólica que se hace con la caña de azúcar. Es muy usado en todo el Caribe para hacer cócteles como el mojito, que se hace con ron blanco, azúcar, limón, menta o hierbabuena y agua mineralizada. Okay, it's azúcar. I don't know where you read it, but you read something else, I guess. Okay, sir. It's azúcar.
Okay. आसुकार इज आई गेस एक गाड़ी का नाम भी है अब तो शायद नो आसकार है ऐसा कुछ नाम रखा है Hyundai की कार का नाम है they've kept it as Azure है, Azure. अल्कासार वेट अल्कासार रखा शायद आई नो अजोर भी है एक ओके लेट्स डू एक्टिविटी 2 इट्स टू सिंपल टू इजी इसमें से मैच करना है देयर आर 3 डिशेस देयर ए बी सी एंड डी ई एफ देयर आर 6 डिशेस एंड 6 मैच द फॉलोइंग्स यू हैव टू डू लेट्स डू इट राइट नाउ और एक्टिविटी 3 घर में है यू कैन मेक पतातास दे tortilla de patatas पूरी पूरी रेसिपी दी हुई है एंड यू कैन मेक इट नीचे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज आल्सो गिवन so you can have it and enjoy once you make it is there any students who are into cooking Sir, eating. Experiments. Sir, I हाँ, am into. experiment. Sir, I am into eating. cool that's also about Obviously, sir, खाने के लिए भी बनाना आना चाहिए. no doubt but then again what happens is you make you take an hour to cook and 5 minutes to eat so that's very not Sir, a good it's the biggest scam, you can say. yeah yes so let's do this 6 things on the left so all these are what do you call they are postres now postres is sweet dishes okay Sir, what is churros? churros जो अभी मैं बता दूंगा तो आंसर पता लग जाएगा ना पहले पढ़ो एक बारी कोशिश वो करो तो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है वो. नहीं इसमें हैव टू मैच 5 6 थिंग्स इधर हैं 6 डिस्क्रिप्शन इधर हैं हैव टू मैच व्हिच वन इज Okay, व्हिच sir, okay, sir. और ऊपर उसका पिक्चर भी है चलो मैं पिक्चर बताता हूँ कौन सा क्या है देन यू माइट बी एबल टू तो डी पार्ट है दैट इज churros con chocolate Sir, F तो पनीर बटर मसाला है. अरे नहीं एफ Two plus. इज गास्पाचो हाँ मुझे गास्पाचो भी भूख लग रही है. गास्पाचो Sir, B तो tacos है. हाँ बी टाकोस है ठीक है फिर पाया था वहां पे शायद लास्ट वाला इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिर दुल्से दे लेचे है और फिर कीनुआ है ओके Sir, dulce de leche. Sweet milk. Sir, dulce de leche. हाँ समथिंग लाइक खीर चलिए लेट्स डू इट So quinoa is A. 4. Okay. Quinoa is the first one, A. Let's discuss all together, not one by one. Are you done with all 6? Yes, Yes, sir. Done. So done. Others, are you done? If you're done, then we can discuss. Because I was thinking if we can practice one BSL 002 ka exam. किसी के पास है? We can discuss something here. Sir, A में rice है वो. That's Okay. quinoa. A is quinoa. साबूदाना लग रहा है सर. हाँ सब कुछ सिमिलर ही रहता है बस Rice है ना? Sir, doubt है मेरा ये. वो rice है. Is it rice? वेट करो मैं एक मिनट जरा असाइनमेंट निकाल लूँ No, that's not rice. That's quinoa, sir. Quinoa. I am eating that quinoa. वेट This is Spanish 001 002. Okay. Let's divide 002 1 का भी कुछ. Let me check.
Cool. So I've got two papers. We shall try something from these now. See chicos, okay. Where were we? Chalo, let's discuss. बताएंगे. Which is this dish? ये chocolate con churros का description कौन सा है? Sir, fifth one. Okay, so chocolate con churros is fifth one. It says es un postre que se toma durante el invierno, which is taken in the winters in Spain for breakfast or for evening snack. In a taza se sirve chocolate. So one serves a chocolate. So ये क्या होता है? It's like जैसे मैदे का थोड़ा लंबा लंबा जैसे you can't compare, but थोड़ा similar सा होता है. जैसे नमक पारे थोड़े लंबे से होते हैं ना. Similarly, but they are very thick churros. If you see in the picture, ये रहे. I guess M Block Market दिल्ली में GK1 की एक there's a shop where बहुत अच्छे मिलते हैं. I have tried it once. They are very very good. और जब chocolate is too hot, so it gives a very nice flavor. Next, gazpacho. What's the description of gazpacho? Sixth. Sir, it's cold soup. Six. ठीक है. Paella. सर सी 3. सी 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 Three. हाँ यार 3 वो मतलब pictures नहीं यहाँ पे 3. Okay. नहीं. That's not paella. आई मीन पिक्चर से मैं कह रहा था सी नहीं. यहाँ पे paella is description number 4. Es un plato típico de la región de Valencia en España. Este plato tiene un base de arroz al que se añade normalmente marisco or verduras. So it's a base is rice and they add fishes and veggies. So that's paella. Quinoa. What's quinoa? Quinoa is a sort of rice, and it's like wheat, and normally get it in United States and all. For So diabetes, not so very good one. Quinoa. Yeah, so which one is this? So the answer is first one. First A, one. See there. A. One. And then dulce de leche. So that's Sir, the E. Second. Es un dulce típico latinoamericano que también se conoce con el nombre manjari cajeta. Please mute. Chaliye, next. Do you want to see this recipe of tortilla de patatas right now, or you will do at home? Sir, at home. Okay, चलिए. But इसमें I'll tell you one thing. If you pay attention, हम जितनी भी recipes लिखते हैं ना, we always write them in imperatives. Okay, imperative form use करेंगे हम लोग recipes में. Okay, Okay, sir. यस सर Yes, sir. perfect. Then we talk about there's okay. Can we read this also about this guy? He's one of the most famous chefs in Spain. Chicos, someone please go ahead. सर मैं Yes, please go ahead. Ferran Adrià nació en Cataluña en 1962. A los 17 años trabajaba lavado platos en el restaurante de un hotel para poderse pagar un viaje al Ibiza. El jefe de cocina se fijó en su interés por la cocina y le dio para leer un libro de Escoffier, el gran cocinero francés. Aprendió mucho de ese libro y pronto pudo poner en práctica su conocimiento en un restaurante como jefe de cocina. Durante 20 años, Adrià ha estado creando nuevos platos de comida y revolucionando la cocina española con muchos experimentos. Los helados
calientes, patatas al café, las nubes de vinagre. Tiene muchos premios como el premio Silver Spoon que da la revista Arts and Food de Nueva York, AKL, AKS, y que es el primero más importante en mundo de la gastronomía para la revista Times. Él es una de las 100 personas más influyentes del mundo. Perfect. So this is the guy whose name is Ferran Adria, and his name he has got one of his like the chain of restaurants which name is El Bulli, which is like a 3-star Michelin restaurant. So I don't know you guys know what are Michelin restaurants. So there's this chain which gives Michelin stars, and there are many Michelin stars restaurants throughout the world, but then Spain, London and France का सबसे ज़्यादा है, US में. Okay. इंडिया में आई गेस हार्डली 3 है, शायद 2 या 3. चलिए लेट्स मूव अहेड. Then we move to Un viaje por el mundo hispánico. Sir, I want to know if you know about Ricardo Montaner. Ricardo, I've listened to the name Montaner. What does he do? Sir, he was an actor, right? Okay, no, I have no idea. I'm not too much into movies. Sir, singer था शायद. I don't know. वही art based. चलो लेट्स मूव अहेड. इट सेज एस्पानिया के बारे में पढ़ते हैं हम लोग. लेट्स स्टार्ट विद दिस. दिस इज अ वेरी interesting fact you will come to know here. चलिए let's read España. Someone else. ¿Me perdón? Yeah, anyone. Oh, please. Comencemos nuestra aventura alrededor del mundo hispano con España, un país europeo que una vez decidió cruzar el océano y alcanzar tierras desconocidas y maravillosas, llevando el idioma español al Nuevo Mundo. España es el segundo país más grande de la Unión Europea, con una superficie de 504.645 kilómetros. Es el cuarto país más extenso del todo el continente europeo, después de Rusia, Ucrania y Francia. Es también uno de los países más montañosos de Europa y tiene una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar. Los principales sistemas montañosos son Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Cordilleras Béticas. España hace frontera con Francia y con Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. El territorio se divide en 17 regiones que se llaman comunidades autónomas. Okay, perfect. So Spain basically is a country which is divided, the way we are divided into states, Spain is divided into autonomous communities, and there are 17 of those which are there in the map. So Castilla y Leon is the biggest one, then Castilla-La Mancha, Aragon, Catalonia, Andalusia. These are all 17 states kind of a thing. Okay. And so they have their own flags, sir. Yeah, all of them have their own flag. अच्छा flag ये देखा पीछे? This is Spanish flag. Yes, So sir, yes. ये चारों का अलग अलग 5 flags हैं इसमें. 1, 2, 3, 4, 5 and ये गनाडा नीचे 6. And then this is the monarchy का. Have I shown you the flag का video? Yes, sir, yes. Yes, sir, you showed us. So this is the crown and these are the plus ultra marks जो कि पहले यहाँ पे दिखाता था ने plus ultra. Ne plus ultra means कि there's no world beyond Spain. अब उनको लगता है कि this is the end of the world. But जब उनको लगा कि okay उधर Americas हैं all the stuff, तो उन्होंने ने हटा दिया. They removed the no and then plus ultra means कि okay there is a world beyond.
That's how it moved. Yeah. चलिए, let's Sir, move ahead. all 17 countries have their own flags. No, 17 countries नहीं, 17 communities. States. Sorry, okay, States. okay, हाँ, okay. countries नहीं है वो. Shall I show? Wait, अभी I'll show it to you right now. I guess this should be shown. सर इंडियंस भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे अलावा कोई देश ही नहीं. नहीं, उनका सिस्टम अलग, उनका स्टार्टिंग से ही सिस्टम है ना. अब एग्जाम्पल पहले भी तो शायद ऐसा होता ही था. आई एम नॉट टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जैसे हैदराबाद का अलग से सिस्टम चलता था पूरा, या Yes, निजाम sir. का अलग. तो निजाम. वो अब सर वैसे अभी तक कश्मीर का भी अलग फ्लैग होता था, तो अब तो आर्टिकल 370 के बाद वो फ्लैग भी हटा दिया ना. एक सिर्फ कश्मीर थी हमारा स्टेट था जिसका अलग फ्लैग था हमारी कंट्री में, तो उसका आर्टिकल के बाद जो है वो सर वो फ्लैग हट गया. So let me show it to you right now. So if you see on the right, ये सब flags हैं. Let me show you अगर यहाँ पे लिस्ट अच्छे से दिखे. नहीं, okay. This on the right. Can you see now? If I can Yes, sir. zoom Yes, in. sir. No, नहीं, अच्छा खुला. But then flags are not here. ठीक है, वहीं से देखते हैं. So these are all the flags that are there. तो देखो, if you see कातालुनिया अरागोना का सिमिलर सा है, बेलियारिक और वालेंसिया का सिमिलर सा है, माद्रिद और कांताब्रिया इज सिमिलर. तो ऐसा चलता है. ऐसे एक्स्ट्रा मादुरे और अंदालुसिया का सिमिलर सा फ्लैग है. मेलिलियाई आस्ट्रूरियस का भी सिमिलर सा है. So that's That all. I was asking, sir. They have their own flag. Different flags are there. हाँ, they have their flags. सबके फ्लैग्स हैं. और तभी तो इफ यू सी ये चारों पांचों हर एक का एक कंपोनेंट है. एग्जांपल जो ये वाला है, ये कास्टिलिया लियोन का से लिया हुआ है. ये दोनों, इफ यू सी मींस आई डोंट नो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो ये दोनों वहां से लिए हुए हैं. दिस दे हैव टेकन फ्रॉम Valencia, Catalonia. वो वीडियो में ना अच्छे से बताया हुआ है कि ये वाला किसका है, ये वाला किसका है. ऑल्सो बिकॉज टू स्मॉल भी आई कैन नॉट सी कि कौन सा कहां से लिया. बट दे हैव टेकन, पहले ऐसे ही थे इन सबके फ्लैग्स भी ना. तो वहां से वो लिया, वहां से वो लिया, बिकॉज इनिशियली दे वांटेड टू शो, बिकॉज पहले कास्टिलिया लियोन बहुत बड़ा था. दैट वाज द बिगेस्ट. I have वो a अरागोन भी question. उसके अंदर. या अब जो है ना, जितने भी ये कम्युनिटीज है, ये सब सेम फ्लैग यूज करते हैं, दैट इज बिहाइंड यू, या फिर अभी भी इनका सबका अलग ही नहीं, फ्लैग है? सबका अलग फ्लैग है और स्पेन का फ्लैग है, पूरे स्पेन का फ्लैग. तो इफ यू गो टू एनी ऑफ दी स्टेट्स के ऑफिसेस में, यू विल फाइंड टू फ्लैग्स, एक स्पेन का फ्लैग एंड देयर फ्लैग. और यूरोपियन यूनियन का फ्लैग भी था वैसे तो पहले, अभी भी है. हाँ, सॉरी. मतलब यहाँ पे फेडरल सिस्टम चलता है. हाँ, फेडरल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे कि इस तरह से होगा ना कि मतलब अलग स्टेट्स तो हैं जैसे अमेरिका में होता है. हाँ, वहां हाँ, भी अमेरिका फ्लैग्स हैं, वहां पे भी सारे अलग हैं. अलग फ्लैग्स हैं. हाँ, सबका सिस्टम अलग है. वहां पे सिस्टम भी ऐसा. हाँ, दे हैव देयर ओन सिस्टम, ओन टैक्सेशन सिस्टम्स, ओन मेडिकल पॉलिसीज एंड एवरीथिंग एल्स. वो है. So what I'll means if you want to know more deeper about Spain, then ये क्या करो, ये ना विकिपीडिया का पूरा डॉक्यूमेंट है ऐसा. इसको कॉपी करके पेस्ट करके ना इसका प्रिंट आउट निकाल लो इंग्लिश में पूरा, एंड गो एंड रीड. Okay. यू विल लर्न लॉट ऑफ स्टफ जो कि बहुत डिटेल, बिकॉज जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी चीजें, और थोड़ी चीजें जो आपको लगेंगी कि अच्छा मींस यू, एंड देयर विल बी थिंग्स, फैक्ट्स दैट यू डोंट नो अबाउट स्पेन. यू विल कम टू नो अबाउट देम. ओके, Yes, चलिए, sir. cool, perfect. So let's move ahead and let's finish that off. Can you mute? Okay, now let's read Sevilla and then Madrid. Chicos, you just use the washroom. Please read it out. Anyone? What to read? Sevilla? Sevilla. सेविया. Sevilla. पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? Shall I? Sure, go ahead. Oh, 1 second. Sevilla es la ciudad más poblada de Andalucía, la cuarta de España, después de Madrid, Barcelona y Valencia. Muchos turistas
van a Sevilla para tomar tapas, un aperitivo, aperitivo que se sirve en la mayoría de los bares acom- acompanad- Acompañado. acompañado Acompañado. a la bebida y ver sus hermosos monumentos como la catedral con su bonita giralda, la Torre del Oro y Alcázar. Sevilla es la tercera ciudad más visitada de España después de Barcelona y Madrid. Por Sevilla pasa el río Guadalquivir, Guadalquivir que es navegable. Del puerto de Sevilla salieron muchos barcos que marchaban a América Latina cuando fue descubierta. Sevilla es una ciudad tan maravillosa que muchas óperas se han ambientado ella como las famosas Carmen el Barbero de Sevilla o las bodas de Figaro. Sevilla es internacionalmente famosa por dos festivales, la Semana Santa y la Feria de Abril. En la Semana Santa los sevillanos sacan a la calle ima- imágenes que representan la pasión de Cristo y las paseen por la ciudad campanandiolas de música e incienso para celebrar una importante festividad en el mundo católico. La Feria de Abril es una festividad muy alegre donde la gente se viste con trajes de colores vivos y cantan, bailan, comen y beben desde la mañana hasta la madrugada. Okay, chicos. So Sevilla is, I guess, the fourth. I did not was not there. I guess it's the fourth largest city in Spain after Madrid, Barcelona, और कोई और एक और होगी, I'm sure. Must be Valencia. Valencia. Must be Valencia. Yeah. So it comes on the fourth number in terms of the popularity and the size and things around. And there are a lot of places to visit. So Sevilla is like es la tercera ciudad más visitada, like the most visited city in Spain after again Madrid and Barcelona. And there, so if you see this river, this is one of the most famous rivers. It's the river is Guadalquivir. Okay, Guadalquivir is the name of the river, and it's Torre del Oro, golden tower इसको बोलते हैं, because I guess जो शाम को ऐसा लगता है, it looks like a golden tower. Okay, then we move to Madrid. So Madrid has all the government offices, the residence of the king and governor and prime minister, and a lot of other things like the banks are there. Gran Via, this is a very famous street. This street का नाम ऐसे बोलते हैं that a street that never sleeps. इसका short name है. If you search on Google also, you will find this. It is the capital of Spain. Madrid is. Yeah, Yeah. Can someone go ahead and read? I am doing so. Madrid es la tercera ciudad más grande de Europa, después de París y Londres. Como es la capital de España, en Madrid se encuentran las sedes del gobierno, los
ministerios, las instituciones más importantes y la residencia oficial de los reyes de España y del presidente del gobierno. Los museos de esta ciudad son conocidos internacionalmente como el Museo del Prado, del que hablamos en la unidad 15. El Museo de... sorry, 15. 15, ok. El Museo de Arte Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza. Además de los museos, los turistas visitan la Puerta del Sol, donde está el kilómetro cero, que es el punto de partida de la numeración de todas las carreteras radiales del país. La fuente de Cibeles, donde los aficionados del Real Madrid celebran sus victorias en el fútbol, o la Plaza Mayor. Cerca de Madrid también hay muchos lugares de gran importancia histórica que merece la pena visitar, como el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la hermosa ciudad de Toledo o Alcalá de Henares, donde está la casa donde nació Miguel de Cervantes, el autor del Quijote y del que hablamos en la ciudad 29. 29. Nuevo is new. This is 29, 9. yeah. Yes. So, I don't know. Okay, so again, this talks about the places which are there in Madrid. So there are a lot of museums. So if I give an example, like Spain may, there are maximum number of museums in Spain. तो इफ आई गिव एन एग्जांपल, जितने यहाँ पे मंदिर है ना, अगर तुम थोड़ा समझना चाहो तो उस हिसाब से वहाँ म्यूजियम्स हैं. ओके, देयर आर लॉट ऑफ म्यूजियम, देयर आर लॉट ऑफ म्यूजियम्स इन स्पेन. तो अगर उसमें ना, आई गेस देयर इज दिस कैलकुलेशन दैट पर स्क्वायर मीटर पे नंबर ऑफ म्यूजियम्स आर मैक्सिमम इन स्पेन, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है. इफ यू टॉक अबाउट ऑल द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, Spain has got maximum number of museums. And they have very well preserved it. I guess each and every city has a museum. ऐसा मामला, lot of museums. Okay, Is it let's out see. of context, just to understand? Mhm. Like for example, when we are having a lot of mosque or a lot of temples, it gives you a feeling like you are the society is too much, you can say, religious. At the same time, when you are having a lot of museums, what it indicates actually, how the things I'll are. tell you how what it means, that you are very much keeping your history in your mind and then moving ahead. Example, if I talk about us, India, we don't respect our history the way we should be doing it. Yes. You're getting it? So if you go to London, if you go to France, if you go to Spain or Madrid or any of these cities, they have preserved their history, they have preserved their things that their ancestors had, their ancestors belonged to. All those things they have preserved and they have kept it and they value it, they teach it. But when it comes to India, if I'll say, we are not that great enough to acknowledge the history. Example, again, I guess everyone knows this, that whenever we talk about the freedom movement, we are talking about only 5 people. सर जलियांवाला बाग जो था, जो उसकी ओरिजिनल शेप थी, वो भी सारी खराब करके रख दी. तो समझ रहे हैं? तो that's how it works. They spend so much money on the preservation of their monuments. They spend so much money on preservation of everything that they have because they value it. That's what I personally, that's my personal opinion. That's what I feel. I don't know, Anita ma'am, if you want to add something, because you've been to I think they are art lovers also. Like there are museums
historical, obviously, like you are saying, they just they are proud of their country, they love their history, but moreover there are other museums also, especially painting and all that. हाँ, Spain, They Spain. love art, and they are connoisseurs, they know. I'll give you an example. But is it not? It is giving you the feeling of different ethnicity or a pseudo patriotism, like something like that you are imposing in the society. Because I'll tell you For example, if I'm the doing structure. India, that means it doesn't mean that I'm patriotic or I'm just taking into consideration the history, but at the same time, I'm just trying to be more, the thing is presenting that something I'm a super, we can say, a creature. Okay, I'll give you an example. I'll just would want to give few examples and then say why I feel what I feel. Example, I lived in London for a year. And if I compare India and the London in terms of art only, there every street, or I guess after every 30 or 40 or 50 shops, you will find an art gallery. Now, how many art galleries have you seen in your life till now in India? National Hardly. National Gallery of Modern Art. हाँ, तो वो गवर्नमेंट की हो गई ना, कोई Yes. पर्सनल आपको आर्ट की शॉप नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे जाके आप पेंटिंग खरीद सकते हो, यहाँ पे जाके किसने कोई वास मंगाया वो खरीद सकते हो, बट देयर वहाँ ऐसे सैटरडे नाइट ऑक्शन चल रही है आप आर्ट को लेकर, समझ रहे हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं, और इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि ओके लोग अपने घर पे उसका आर्ट ले जाके ले रहे हैं. आई टेल यू द रीजन ऑल्सो. मैम ने भी बोला कि ओके दे प्रिजर्व देयर आर्ट एंड ऑल्सो. आई टेल यू द रीजन व्हाट आई पर्सनली फील ऑन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज. जब इंसान का खाने का होता है ना सामान, तो वो बाकी चीजें करता है, तो उन देशों में वो सब फुलफिल्ड है. If you talk about all the European nations, they are fulfilled. Their stomach is filled. Their population is not going to sleep without food. And if you talk about our country, there is still a lot of imbalance in terms of the distribution of money. तो पहले इंसान वो ही पूरी कर लेगा तो ही आर्ट लवर और फिर वो सारी चीजें आएंगी. You getting? They are developed and we are developing. Yeah, ठीक है, developing भी ठीक है, but then if half of your nation is wandering for jobs, don't know what your future would be, then you will not think of art that time. You would first think of survival. तो वो स्टेज उनकी थी, वो निकल गई. देखो, every nation goes through all the stages. There was a stage when all the nations have struggled throughout. Germany was struggling at a time. Russia was struggling at a time जब वो USSR था. But they had a journey and they pulled it off. I guess they pulled it off because there were less number of people. They had people who could rule better and other things. But with such a complex nation of ours, it's not that simple. So if you compare India is whole Europe. जितनी countries वहाँ हैं उतनी यहाँ states हैं. जितनी population वहाँ है उससे ज़्यादा population यहाँ है. पूरे यूरोप की भी कर लेंगे calculate. तो if you treat India as a continent altogether, then it will be a better understanding of thing, because हम कंट्री को कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं. अब हम स्पेन या फ्रांस को या जर्मनी को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कितने लोग हैं, पूरे स्पेन में 4 करोड़ लोग हैं, और यहाँ हमारे यूपी में कितने लोग हैं, 13 करोड़ लोग हैं. सो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल. तो ऑब्वियसली मैनेजिंग 4 करोड़ पीपल इज टू इजी. उनको एजुकेट करने में 2 से 3 जनरेशन लगी होगी. यू गेटिंग मी? यस, अंडरस्टूड. इंडिया में लोगों को एजुकेट करने में काफी जनरेशंस बीत जाएंगी. एक बेसिक एजुकेशन की बात करूं मैं. बट थिंग्स आर वेरी वेरी गुड राइट नाउ. थिंग्स आर गोइंग फाइन एंड इट विल मूव एट अ फास्ट पेस इन कमिंग ईयर्स. आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज अब लोगों को समझ में आ रहा है हमें क्या करना है. बिकॉज एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर जनरेशन वॉज डाइंग फॉर, they lived for survival. My father's nation was not looking for survival, they wanted to grow. And then our generation right now want to grow at a very rapid race. समझ रहे? So अभी वो स्टेज हमारा चल रहा है, वो स्टेज उन लोगों का कब का निकल गया. So we can't compare the stages of the countries also like this. But if you want to compare India, then you can compare with Mexico and Colombia. उनका वो स्टेज है, like in few social parameters, if you want to compare the standard of living and the people around us. Okay? Yes.
सर आर्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब इतनी की आर्ट की वो यार नहीं है, वही वाली बात जब पेट है। भूखा होगा तो आर्ट थोड़ी अच्छी ये लगेगी। तो है, ये बात सही अब मैं है। किसी यस बच्चे को लेता हूँ, बताइए आर्ट कैसी लग रही है, कहेगा पता नहीं सर क्या ब्लू कलर का पेंट कर दिया है। यू गेटिंग मी? यस यस when you are full with your stomach you will enjoy other things in life, so that's why in India you will see that अभी तो fight वही चल रही है ना, so that's the only thing I want to say here. So if you compare social things in Spain, अब Spain में you will, if you go to Spain in the night, they have got amazing night life जो कि अब दिल्ली मुंबई में लिखती है, but if you go to some small area or some tier 2 3 countries cities in India आपको वैसी नाइट लाइफ नहीं मिलेगी ना। अब वो लाइफ वहां ऐसी है बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्टेज पे है, वो उससे ऊपर ही जाएंगे ना, उससे नीचे थोड़ी आ जाएंगे। तो दैट्स द वे अहेड फॉर देम। इफ यू सी इबीसा, वहां इतनी पार्टीज होनी है, रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव टेकन केयर ऑफ देयर सर्वाइवल। समझ रहे हो? पूरी लाइफ काम भी नहीं करेंगे तो भी उनकी कंट्री उनको पैसा देगी, वो रह लेंगे। You're getting me? यस यस That's how, यस हाँ, that's how it works. So it's comparison तो होना ही नहीं चाहिए. But if you talk about that, you were telling me कि okay, pseudo nationalism and all stuff. Uh, again, if you suppose if I go right now to इंडिया में, मेरे को लगता है 50 मॉन्यूमेंट्स के अलावा ज्यादा हम लोगों को बाकी ध्यान नहीं रखा हमने मॉन्यूमेंट्स का। एग्जाम्पल अभी यू टॉक अबाउट, सबसे अभी किसी से बात करो, एक तो इंडियंस थोड़ा सा ऑफेंसिव भी हो जाते हैं ना, ऑफेंस ले लेते हैं फटाफट। I'll give you an example. You talked about India, about education. The only thing they'll say, no, the world's first university was our Nalanda University. Yes or no? ये तो है ही सर, तो इंडियंस प्रेजेंट देखो ना, थिंक ऑब्वियसली बात है। ठीक है, नहीं, but have you preserved it हम well? हम है, सब बात ही कम है। हाँ, have you preserved it well now? Are you doing something right now? No. यस सर, बना दो दोबारा, क्या हो गया? वो तो बना है दो सर। दोबारा, that's the thing ना। तो we are not moving. सर, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन इज ऑल इन टेम्पल्स। अच्छा, नहीं, this is something you are, नहीं सर ऑब्वियसली ये देखो सर ना, जैसे राम मंदिर वाराणसी बनाओ यार, वाराणसी है, मंदिर बनाओ एंड आप स्कूल मत बनाओ, सिंपल। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ऐसा नहीं, चीजें जरूरी हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, तो यू वांट टू अंडरस्टैंड, अब तुम बोलोगे भाई स्पेन में मॉन्यूमेंट म्यूजियम बनना बंद हो जाए, तो यू कैन कंपेयर देयर म्यूजियम्स विद आवर टेम्पल्स। वी हैव आवर हेरिटेज देयर, बट हमारा हेरिटेज बहुत पुराना है जो कि दुनिया विश्वास नहीं करी, इसलिए हम भी विश्वास नहीं करते। So that's how it works. We सर want जैसे others to prove it right, and then we would want to believe it. सर जैसे वाराणसी की घाट्स हैं और ये सब हैं, इनको तो आप प्रिजर्व, वैसे तो प्रिजर्व किया जा रहा है अब धीरे धीरे करके, लेकिन हाँ, वैसे ये भी हमारी एक तरह से हेरिटेज है बहुत, कि बिल्कुल ये हेरिटेज है। ये सिटीज मतलब आयरन एज की सिटीज हैं सर, बहुत पुरानी सिटीज हैं। That's the thing. If you talk about ये पेरू में बात कर लो, ग्वाटेमाला में बात कर लो, इन सब कंट्रीज में इतने पुरानी सिटीज हैं जो उन्होंने अभी प्रिजर्व करी। एग्जांपल माचू पिचू, आई डोंट नो, यू नो अबाउट माचू पिचू? मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया यस सर, अब वही नो। माचू पिचू इज सो मच प्रिजर्व्ड कि आपको 5 या 3 किलोमीटर पहले गाड़ी पार्क कर देंगे, वहां पे आपको पोल्यूशन का पी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे हैव स्टार्टेड प्रिजर्विंग इट। बट इफ आई टॉक अबाउट ताजमहल, पिछले 20 साल में आप देखो ना, हुआ है डिग्रेड इन टर्म्स ऑफ द कलर एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड। सो दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिजर्वेशन। यस आई एम नॉट सेइंग कि आप वहां पे खड़े रहो सारा वो लेके, नहीं, बट यू हैव टू प्लान वे बेटर। तो वो सर प्लानिंग, इसमें हाँ, फंडिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे अब हुमायूं टूम पहले बहुत ही डिलैपिडेटेड स्टेट में था, अब काफी उसको कर दिया है। okay, you've got, again, I'll give you one more example. You name any country in the world, you name any developed city की बात करते हैं अभी, city in the world, all the cities have used river as a source of money, as a source of income, as a source of tourism kind of also। कितना टूरिज्म है? यू गो टू दुबई, आपको रिवर पे टूरिज्म दिखेगा। यू गो टू स्पेन, रिवर में मिलेगा। जो रिवर दिखाई थी ना, यहाँ बड़ी बड़ी बोट्स चलती हैं, शिप्स चलती हैं, लोग जाते हैं, कुछ पार्टी करने जाते हैं, कुछ सिर्फ घूमने जाते हैं, कुछ सिर्फ रेस्ट करने जाते हैं। फ्रांस में जाओ, आईफिल टावर के नीचे जो देयर इज दिस रिवर गोइंग ऑन, ओके। अरे ये सारी बातें ना करो तो याद थी ना। तो इफ यू गो टू पेरिस और मैड्रिड, यू विल सी अ लॉट ऑफ रिवर्स बीइंग यूज्ड for communication, for transportation and other things. But if I see our country, no, we are not doing it, and I don't understand why till now. There's some अभी वो कुछ बोट 2-3 चलाई है, but come on, that's not even 0.00। सर लेकिन जैसे चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि मतलब दिल्ली को लंदन बना देंगे, सर वेनिस तो बना ही दिया था, बारिशों में बंद हो जाता है। ठीक है, वो सब पॉलिटिकल बातें ठीक है, बट
सर बेसिकली ना लोगों का हिस्ट्री पढ़ पढ़ के पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। इतने हिस्टोरियंस हैं हमारे इसमें पूरी इंडियन हिस्ट्री में, जो इंडिया आए भी नहीं है तब भी पूरा एकदम इंडिया के ऊपर पूरा छाप के बैठे हुए हैं। But उनका believe me, हिस्ट्री स्टूडेंट। हाँ, if we had a Varanasi similar like city in any other country ना, they would have been advertising in such a way कि दुनिया को बोलना कि हमें यहीं जाना है। Exactly. Yes, sir. And we और मेरे हिसाब से तो we Indians don't know about Varanasi that much the way Yes, we should Taj be Mahal. knowing it. We only know Taj Mahal. We only know some other monuments, So but let's say Varanasi is way 40 more older than that. Yes, sir. So that's the thing. If we had a similar city in somewhere else, na, they would have been selling those things. Ki okay, आओ यहाँ पे आओ और spend your money. We'll grow, you will grow, and all the stuff. Sir, So like वो we चीज is spending missing. money on Himachal tourism and Madhya Pradesh tourism, as we can see in TV commercials ना, हाँ कि अभी कैसे हाँ लोग एकदम से बूस्ट कर रहे हैं हाँ ताकि वो लोग वहीं पर ही घूमें। but that's the thing ना. But this should be done by the central government for the whole of the India. ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट आ रही है कोई एक गवर्नमेंट आ रही है तो वो अपना कर रही है ना. This should be done throughout and to the world, to the world. But I'll tell you, there then problem comes here also. Example, I was just reading an article that day, so it said about the COVID thing which is going on. Okay, so again, we all know what happened in the second wave, but it's not that कि सिर्फ इंडिया में हुआ, ये सब जगह हुआ, but the bad name was India's. Yes, The sir. reason is Exactly. when we have got enemies within, we don't need Yes, anyone sir. else to destroy. So एक Yes, तो ये इशू काफी ज्यादा है. इंडिया exactly. के नाम पे ना इंडिया को खराब करने की थोड़ी ज्यादा इशू रहते हैं. तो आई गेस दैट शुड नॉट बी द केस. बट इफ यू एग्जांपल स्पेन में, इफ यू टॉक अबाउट स्पेन, in the first lockdown, the situation was very bad. It was pathetic. I guess Italy and Spain were the two most hit. Yes, sir. Italy But and Spain even in also. Italy. US में भी dead bodies are there in हाँ हाँ. But that's what I'm saying. No? But they handled their country's pride. They kept their country's pride first, and then they had their grudges out. But we don't do that. That's an issue. And why I'm sharing you all this is because I've got friends, I've got teachers, I've got people knowing there. And when they comment something on those lines, na, you feel bad about it because that's not really bad the situation in India is. So criticizing India is considered as cool. I mean, and That's the yes, norm. Ki if you do it, you'll be famous. ऐसा. yes, so yes, But sir. okay, that's how some countries have. It's again, it's a phase. It's a phase. This will also go away. So let's move ahead. Let's see Central American countries again. Now I'll give you more examples. We talk about US only. Suppose if I talk about America, ये काफी ज्यादा issue रहता है सारी Latin American countries को. If I'll share this with you, if you talk about America, the only thing which will come in your mind is USA. But that's only 30%, not even 30%. You're getting me? Yes, sir. That's American how continent is different. American country is Yeah. different. So अमेरिकन कॉन्टिनेंट दो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसमें से एक कंट्री है बहुत सारे स्टेट्स को मिलके बन गए हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वैसे ही मेक्सिको का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ या यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मेक्सिको. सो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट हम जब वो ब्रांडिंग ऐसे करी है उस देश ने कि इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका यू विल ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट यूएसए, और आपको दिमाग में फिट क्या है कि अमेरिका बहुत बड़ा है. तो आप अमेरिका सुनते हैं, आप यूएस सोचो तो आप बोलते हो भाई यूएस इज द बिगेस्ट, इज द लार्जेस्ट, ऐसा. So that's how the branding of the nation has been done. Getting me? तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उनको बहुत इशू रहता है इससे कि dude we are also there in America, don't forget us. और वो एक नहीं है, वो 20-22 है. So ये भी काफी टसल रहता है. एग्जाम्पल थोड़ा टसल ना स्पेन और लैटिन अमेरिका में भी रहता है. If I should share with you now, टसल तो नहीं, because I guess now you're learning the language, you might meet people from both the countries and you should take care. Example, YouTube में ना एक काफी videos मिल जाएंगी that what are do's and don'ts in Spain, what are do's and don'ts in Argentina, because कुछ actions स्पेन में चलते हैं, अर्जेंटीना में उनका बहुत vulgar meaning है. कुछ actions बोलीविया और कोलंबिया वगैरह में चलते हैं, स्पेन में उनका बहुत बुरा मतलब ले लिया जाएगा. Suppose if you go and travel, so you should watch such informative videos on YouTube which will help you expand your mind in terms of language, because now you have learned a language na, so you will have to think globally. You're getting me? Example, Yes. the way you greet in Spain, you should know it. Now you should learn it. तो कैसे करेंगे? YouTube खोल के बैठ जाओ, देखो उसमें. You will find a lot of 5-10 videos which you can see and learn it. You don't have to go to Spain to learn all this. You're getting me? Although chance मिले तो जाओ, but अच्छा इससे मेरे को याद आया, there are what do you call, there's this
again, I guess it's too early to tell you guys this, but again, I'll tell you. So what happens is there's a teacher exchange kind of a thing which happens where you can go to. Wait a second. Got a message from the institute. Wait. Can you guys just continue the reading of this and this part? Chicos? Yes, sir. Yeah, please go ahead. सर ये सेंट्रो अमेरिका एल कैली Yes, 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 yes. América Central o Centroamérica es la región geográfica dentro del continente americano comprendida entre América del Norte y América del Sur. Políticamente se divide en 7 países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todos excepto Belice son países de habla española. A este grupo también se añade México, que aunque geográficamente está en América del Norte, sus costumbres, cultura, idioma e historia es más cercano a los de los países de América Central. El Caribe es una región en el Mar Caribe compuesta por numerosas islas que son distintos países. Los más grandes son Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, las 3 de habla española, Haití y Jamaica. Haití y República Dominicana son 2 países que están situados en una misma isla. Sorry. La Habana es la hermosa capital de Cuba, la isla más grande del Mar Caribe. Es una ciudad llena de histórica y vida. Los turistas acuden a su centro histórico, pasean por el malecón que bordea el mar o van a fotografiar la Plaza de la Revolución, donde encuentra un monumento, el famoso poeta José Martí, y la imagen de Ernesto Che Guevara, personaje que conocimos en la unidad 29. Esculpida en el edificio del Ministerio de Interior. Como la historia de La Habana es fascinante. Sus museos están llenos de objetos interesantes, pero también es interesante simplemente observar las calles y ver cómo los niños juegan
al béisbol. Béisbol, como los músicos cantan en la calle, los coches antiguos que todavía se usan o los edificios pintados de todos los colores, rosa, amarillo, verde, azul. Una de las cosas más interesantes de la Habana es que tiene una vida nocturna muy activa. Siempre puedes ir a un cabaret, a un concierto en directo o a una sala de baile para practicar la salsa o el cha-cha-cha, estilos de música muy populares en Cuba y que estudiamos en la unidad 14 del libro L India 1. Okay, chicos, I've got a call from the sir that we might have to wait for longer to sir to join the class because he's having a meeting. Okay, so we'll wait till then. So again, La Habana is the capital of Cuba, one of the, I guess, very beautiful city. If you, I don't know, have you seen that movie? Salman Khan ki movie hai. There's this movie which they have shown. Means obviously there are different movies which shows Havana, where the last scene he goes to Cuba and he टाइगर says, में था वो शायद. हाँ एक था टाइगर में, yeah. Okay, चलिए let's move ahead. Las Islas Galapagos, again this you can just read about yourself. There's this things. Wait to. Then we talk about Mexican Revolution, Guerra Civil, and Cuban Revolution. Cuban Revolution के बारे में हमने पढ़ लिया है. Oh, I guess we should read about Guerra Civil de Española. Chaliए chicos, let's read. Just give it a read. Or if you don't want to read, what we can do is we can see one of the papers which I found. If you want to do it, just go through it once. 001 ka, if you wish to, we can do that also. Till time, I'll just make a call to sir and ask what's the scene. I guess let's do a paper because reading तो तुम लोग घर में कर लोगे. I'm sure about it. Let's do this. See, chicos. Let's do question number 1 and 2 right now. So what is nuestra? R, What? R, OUR. Okay, thank you.
See, chicos, I guess it will take 5 to 10 minutes. Yes, sir. हाँ जी, चलिए बताइए. It says selection वाला ऑप्शन करेक्ट था, गुस्ता ही गुस्तान. फर्स्ट वन, फटाफट आंसर बता दो अब तो. A mí me gusta. Why gusta? Because the next word is a verb. खुगार है तो पहले गुस्ता आएगा. Second, te dash al baloncesto. Gusta. Te gusta. 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 Next, C part. Amis amigos dash les dash. Les gustan. Gustan. Why गुस्ता? Os नहीं, यहाँ gustan. गुस्ता ही नहीं, गुस्ता ही आएगा, गुस्ता ही आएगा. ऊपर गुस्ता ही आएगा C में. Because there is a verb after this, ir. So we'll only use gusta, not gustan. Okay. Okay, okay. Next, os dash la biblioteca nueva. Gustan. Gustan. Why gustan? Because after it is the plural. verb, noun. Verb नहीं. No, there is only one Sorry, single vosotros. noun. There is one single noun. Okay. So Mm, that's okay. that's how you might get some questions, and you have to tackle them using your concept that we have learned. Okay. सर तो Okay, गुस्तान sir. होगा ना. नहीं गुस्ता होगा ना, because we have got a la biblioteca nueva, the new library. Singular. That's a singular object. So whenever there is singular, Okay. we use gusta only. Okay. Okay. Les gusta. Les gusta, E part Yes. ठीक है. F Nos gustan. ठीक है. G No me gusta. सर F बता सकते हो F क्या था? F is gustan because उसका जो next word है. Okay, let's understand. गुस्ता से पहले वाला जो word है that will depend on the subject, and जो उसके बाद वाला word है that will depend on the nouns. Example उसके बाद है los helados de vanilla, the ice creams of vanilla and chocolate. So this is a plural object, so we'll use gustan. Okay, sir. Okay, I guess sir is there. First, let's we can continue this later. Okay. Yes, Yeah. sir. Good evening, Dr. Saab. Good evening, sir. How are the sessions going on? The sessions are going. I guess you should take feedback from the students. They are the better ones to comment on that, I guess. Okay. Any student, you are most welcome. Any student, if you want to say something. Sir, Yeah, the sessions, sir, very good. The session is very good, sir. sir, yes, sir. Sir is very perfect, and he gives lots of examples and very proficient. That's please helping us a lot. Kindly switch on your camera, please, so that Yes, I will student, be able to see you. All those who can switch on their cameras, please do it if you're not out. Yeah, kindly switch on your camera. Good evening, sir. I want to take a group screenshot. Good evening, sir. Good evening, very good evening. Perhaps it is your last session today. Yes, sir. So I want to take a group screenshot with all of you. Yes, still. All those who students. can, please switch on the cameras. Kindly switch on. Anita, Udeshya, Ashna, Bhavik, Divya. Yes, every one of you, please. It is a good, a memorable moment for all of us. It is last session today, perhaps. Palak, Bhavik, Ashna, Divya. Sir, actually my laptop doesn't have webcam. Okay, no issue. That is a genuine problem. Share. Yeah, okay. Let me have some feedback from the students, please. Yeah, any one of you, genuine feedback. Our and our minor points. Mayank sir is like he's teaching very well. He doesn't stays only in the book. He goes out of it too. So that gives a good idea about the language. Like language learning cannot be done only by the book. That's what he taught us. Mainly. Good. Actually, in my childhood, I learned that language is in the environment. Yes, sir. Yes. In my childhood, and it is still in my mind that language is in the environment. Yes.
Yeah. Any other student, please kindly share your Good feedback. evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, sessions were really very nice, and those were really. I was expecting someone who can guide me. So yes, sir has done a great job. I'm really very satisfied. Thank you. Okay. Thank Good you. evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Uh, Yes, uh, please. I think that I have hardly taken any classes from Dr. Mayank, Mr. Mayank, and the moment somebody told me that you just take the first 5 classes and probably you'll get a hang of Spanish, and I think I got it in the first 3 classes, and I'm still with the third or the fourth class, but by and large, I've picked up so much in those 4 classes. Uh, to be honest, it's going to take me more than a year to give my exam, but uh, I think he's a great teacher, no doubt about it. Uh, I'm a doctor, and I know that Thank you, ma'am. this kind of teaching is really appreciable. And even when he says, "Okay, let's go super fast," I know when he goes super fast, he knows these things don't need to be touched. And all his, I'm in touch with a few of his students. They too appreciate him a lot. And I wish you best of luck, Mr. Mayan. Thank you, ma'am. Thank you, And ma'am. I request you, sir, that these recordings need to be heard by us several times. So I hope they will be on your classroom till the end of the day we give our exam. Will it be on the classroom net, or Ma'am, will it just vanish? ma'am, I think that almost all of the recordings are being shared with the students, perhaps. Yes, sir. Yes. All the recordings shared. Ma'am is asking that will they stay even after the course ends or Yes. Yeah, of after the course, exams yes, also? of course, yes, of Yes. course, yes. Okay. This is now because you all have contributed in this. Now it is your personal property as well. You Oh, can have thank you it. so much. Exactly. You can have it. Mr. Mayank's one class is almost equivalent to how many classes online, offline? I'm dead sure about it. Thank you, Dr. And Mr. ma'am, Mayank. and ma'am, you are a role model for all of other students also, all of us. Yeah, when I actually speak Spanish, I'm going to actually call all of you and speak Yes, Spanish. ma'am. Why not? Why not? We'll have some meet someday apart Ye- from the Yes, no university. doubt. Yes, Yes, absolutely. yes, Yes. yes. Good That evening, is sir. good I thought evening. I was the only senior student in the class. Now that I'm No need seeing to, ma'am. Dr. Rita, she's another one. No, no. So I was just refreshing my Spanish. I know a little bit. And it's fun. It's fun. I'm learning a lot. And yes, Mr. Miyank is a very good teacher. We are learning not only language, we are learning about, as the course suggests, it's about Spain also. So I'm learning many things. And yeah, very good. Nice. Thank you, ma'am. Okay. Nice being here in the classroom. Yes, yes, yes. I try not to miss my classes. And I'm a French professor, sir. I know Okay. I've been teaching French for more than 20 years, and I know the difference how to teach language. His teaching method was very fine, very fantastic. I like this Thank teaching you, very sir. much, and extensively talking about Spain and other places and all. I think apart from the language and all, we were very much interested. We liked it very much. He's a very good professor, teacher, and very good guide also. So I like this Thank you, sir. teaching. Thanks a lot. Thank you. Okay, okay. So it is a great feedback, and I am very happy that our students are highly satisfied with the expertise of our resource person. So I thank you, sir, for your kind time and your valuable guidance to our students. Thank you, sir. Thanks a lot. Now our these old students, they are now our ambassadors, and Exactly. they will be helping us in attracting more learners in our this program. Sure, sure. So I request all of you that you kindly spread a positive message about our these arrangements and our these counseling sessions and our resource person and his expertise. So you can, if you are satisfied only, then you can satisfy other new students, and you can attract other new students also to this program of IGNOU. And we will be highly thankful to you for bringing more students under the umbrella of this IGNOU program CSLC. So my best wishes to all of you, and may all your dreams come true. Thank you so much. God bless you all. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you you, so sir. much. Thank you so much. Thank Thank you. you, sir. Thank you.
Thank you so much. I'm Thank so you. glad to meet you. Thank you so Sir, much. Thank I you. want to ask something. I have a Yes, doubt. please. Yes, Mr. Shorab. Yes. Sir, by chance, is Please, IGNOU planning to please get the diploma please, program also after this? please ask me in English only. I don't know Spanish. Please don't apply your Spanish on me. No, sir, no, sir. Sir, I was asking if What you IGNOU is have- planning to what you if have IGNOU is learned planning to is- get the diploma program. Yeah. Sorry. What's your question? Sir, by chance, is IGNOU planning to get the diploma program? Yeah. Or not? Yeah, I think presently we don't have diploma program for this course, but sir, I had a word with Dr. Vikas. With Vikas se baat hui thi. He said that it's in the pipeline. I guess it would have been there if COVID wouldn't have hit it. yeah. But it's there. It's totally planned. Yeah, at present it is not on offer. Yeah, But- but I guess soon. Yeah, let's hope Please so. rest assured from my side. I'm please in rest- for that course. Yeah, please. I can give you my word about it. That as soon as this diploma program is launched by IGNOU, because we have your admission data, then I will personally send you an email notifying you that diploma program has been launched, and then I will be requesting you to get admission in that diploma program. Well, that I will be will fine, sir. Thank you. Thank you very do much. that. Thank you very Okay, much. I will notify it to you personally. I will notify it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank Thank you so much. Thank you once again, and God bless you all. And thank you, sir, for your valuable expertise and your valuable time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks. Please continue, please. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, chicos. So वे अभी अच्छा पेपर भाई पेपर अच्छे से करो तुम लोग because where is the paper? Yes, any questions you have? Okay, let we can do one thing. Whenever you have your exam, give me a second. Sir, I have a doubt. I want to tell you one thing.